अस्सलाम वालेकुम। सर ने इतनी अच्छी बातें की, नसीहत आमूज़ बातें। मेरे ख्याल में मुझे इस माइक की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत लाउड हूँ। तो पीमा से मेरा भी ताल्लुक़ है और ये नया ताल्लुक़ नहीं है, पुराना ताल्लुक़ है। और पीमा की तरफ मुझे लाने वाली मेरी एक बेहतरीन दोस्त, जो कि अब एनआईसीएच में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से मैं पीमा के साथ जुड़ी थी। और जैसे सर ने कहा कि एज अ डॉक्टर हमारा काम ये है कि हम अपनी नॉलेज को तो अपग्रेड करें, उसको फ्रेश तो करें, और ये भी हमारे दीनी फ़राइज़ में शामिल है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें अप टू मार्क हो, ताकि हमारे पेशेंट का जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट हो। आधी नॉलेज और पेशेंट को ट्रीट करना अंदाज़ों के साथ, मेरे ख्याल में इसकी दीन में भी इजाज़त नहीं है। और दूसरी जो पीमा के साथ एक अच्छी बात ये हुई कि सर ने कहा कि ईमान की मजबूती के लिए, क्योंकि हम हमेशा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, हम वो लोग हैं जो हमेशा किताबों में घुसे रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, एक के बाद एक और टारगेट होता है और वो दुनियावी कामों के साथ होता है। तो जब मैं पीमा के साथ जुड़ी तो मिसबा मुझे लेके गई, हम दर्स के लिए जो है हमने एफर्ट्स की। एनआईसीएच में हमने पर्टिकुलरली एक स्पेस जो है वो उसको तलाश किया, अपने सीनियर से परमिशन ली, फिर डेली फीमेल जो है वो डॉक्टर्स जो थी उनका वीकली हमने वहाँ पे दर्स ऑर्गेनाइज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो काम वहाँ पे चल रहा है। लेकिन मेरी कोताही है कि मैं कभी कभी उसको छोड़ देती हूँ, वहाँ अटेंड नहीं करती हूँ। लेकिन पीमा से ये ताल्लुक जो है तकरीबन इसको जुड़े हुए भी काफ़ी अरसा हो गया, 8 से 9 साल हो गए। और पीमा की सीएमई के साथ भी जुड़े हुए बहुत अरसा हो गया है, उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और सीएमई के साथ जो है मेरा ताल्लुक रहता है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि इनवाइट किया और दोबारा से जो है वो मुझे एक चांस दिया कि मैं खुद भी पढूं और अपने कुलीग के साथ वो नॉलेज शेयर करूं, और उनके साथ जो है एक म्यूचुअल जो है शेयर ऑफ नॉलेज, मेरी बॉन्डिंग उनके साथ रहे। तो थैंक यू सो मच। और मैडम सामने बैठी हुई हमारी सीनियर मोस्ट डॉक्टर, हमारी टीचर, हमें पढ़ाया, हमारे एग्जाम लिए का फेल भी किया फिर पास किया। तो डॉक्टर मोहसना है, हमारी सीनियर है एनआईसीएच में, और बहुत सारे एनआईसीएच से शायद कुछ ट्रेंड लोग हैं जो कि अब सीनियर पोस्ट पे हैं, वो भी यहाँ पे हैं। सो मेजॉरिटी आई थिंक इज़ पीडियाट्रिक रेजिडेंट, आप लोग जो हैं, राइट। तो ब्रीफ ये है कि डॉक्टर शाजिया कुलसूम, पार्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, हेड ऑफ सेक्शन ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, and pediatric neurology established in an ICH in 2018 when I completed my second fellowship, and we have a separate designated ward, OPD area and neurophysiology lab at an ICH that is working since 2020. Thank you so much. So now this is the topic which has been assigned to me by a PIMA CME section. उन्होंने खुद assign किया, and this is very relevant and important topic for a pediatric point of view. तो अगर हम acute flaccid paralysis को देखें तो how to approach it, इसकी approach शुरू हो जाती है इसकी definition से। जी पूछूं या बताऊं सिर्फ? ओके, बताऊं। So no conflict of interest, and this is very important definition. इसका पॉइंटर चलता है, थोड़ा खराब है। Okay, so WHO has defined acute flaccid paralysis, which I think every pediatric resident must know, and that is written in AFP clinic of every tertiary care in basic health unit. Any child under 15 years of age with acute onset of focal weakness, paralysis, मफलूज हो जाना, ठीक है, including the GBS। और ये मफलूज हो जाना वो है जिसमें जो है वो पट्टे जो है वो वीक हो, या उनकी टोन मेंटेन ना रहे, या वो फ्लैसिड हो, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन, अगर इस डेफिनेशन पे कोई पेशेंट नहीं आता है, 15 साल से कम उम्र या 15 साल का कोई बच्चा नहीं है, कोई भी एनी पर्सन ऑफ any persons with paralytic illness at any age, किसी भी उम्र का हो, और उसमें जो है वो फालिज की अलामात हैं, ढीलेपन के फालिज के साथ है, और आप उसमें सोच रहे हैं कि पोलियो हो सकता है,
तो ये ढीलेपन का फालिज जिसकी कोई और वजह आपको नहीं मिल रही है, ये AFP की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, किसी भी उम्र का हो शायद। अब कोई वजह नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू हैव टू रिपोर्ट दैट पेशेंट एज अ acute flaccid paralysis। तो आगे जाके हम सिर्फ AFP ही बोलेंगे, acute flaccid paralysis नहीं बोलेंगे। ठीक है। So, as I define it, it seems to be a very simple thing, but believe me, this is not a simple. Okay? So AFP has a complex etiological profile. बड़ा मुश्किल है clinically, ठीक है ना, इसकी etiology तक जाना, and it is very important to reach the etiology because it decide the therapeutic intervention and it decide the prognosis. ठीक है? If you find that the etiology is related to the polio, the prognosis is different. If you feel that etiology is related to the GBS, then the prognosis is very good. और अगर आपको लगे नहीं ये तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, AFP की तरह इसने शुरू में प्रेजेंट किया है, तो फिर etiology is variable depend on the extent of injury. ये इसमें से खड़खड़ आ रही है, माइक का प्रॉब्लम है, वैसे आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को। सो इफ AFP remain undiagnosis, it's a very dangerous diagnosis due to certain etiological factor, due to certain differential diagnosis, it may lead to the death. So, pediatric resident तो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं ना, है ना, इवन अडल्ट मेडिसिन में भी, इवन ER डॉक्टर्स वो सब देख रहे होते हैं AFP के केसेस. सो एज वी डिस्कस दैट द etiology is variable. So this is the pictorial presentation of etiological profile or differential diagnosis. तो अगर अच्छा ये भी पॉइंटर नहीं चलता. So the level of injury is कोई बात नहीं. So level of injury जो है वो spinal cord, anterior horn, peripheral nerve, neuromuscular junction, muscle, systemic disease. नजर आ रहा है आपको? So AFP अगर हम आगे जाएंगे स्लाइड्स पे तो यूजुअली द डिसऑर्डर ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, इसकी लेवल वही है कि एंटीरियर हॉर्न से लेके पेरिफेरल नर्व से लेके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस तक. ठीक है, नहीं अच्छा ठीक, लेकिन सम टाइम, थैंक यू मैडम, सम टाइम spinal injury, spinal trauma, spinal disorder at their earliest stage may present with flaccid paralysis. ठीक है, so for the surveillance purpose, for the identification purpose, वो आगे हम बताएंगे कि क्यों ये किया जा रहा है. ठीक है, so it is one of the commonest level of lesion of AFP. ठीक है, systemic disease, myositis, polymyositis present with AFP के साथ, है ना, या फिर critical illness, न्यूरोपैथी, मायोपैथी, उसमें भी फ्लैसिडिटी हो सकती है. ठीक है, so अगर स्पाइनल कॉर्ड में देखें what is the cause of etiologies which present with acute flaccid paralysis, तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में लिए जाएं. डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, स्पाइनल कॉर्ड स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन और वेस्कुलर पेटिशंस. 3 सिंपल, फिर उसकी सब कैटेगरीज आप बन लेंगे. ठीक है, अब SOL है तो वो ट्यूमर भी हो सकता है, एब्सिस भी हो सकता है. ठीक है ना, सो द ब्रॉडर कैटेगरीज आर डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, spinal space occupying lesion or vascular problem of spinal cord. They may present with AFP at the start. Anterior horn cells में हम सब जानते हैं कि पोलियोमाइलाइटिस. ठीक है,
if it is an acute onset, if it is an acquired condition, और अगर congenital है और chronic problem है तो फिर spinal muscular atrophy is the anterior horn cell disorder. ठीक है? So in the upcoming slide we will be mostly talk about the polio. ठीक है? Which is one of the major trigger behind this definition of AFP, which has been generated by our WHO. ठीक है? For those countries where the polio was endemic in those days, 1988, and is still relevant to the Pakistan and Afghanistan. So this is the anterior horn, if the pointer shows you. Gee, it shows you. So peripheral nerves involvement may be a unilateral, maybe a bilateral. So maybe a generalized हमें पता है GBS में होता है, ठीक है ना? And unilateral due to traumatic neuritis हो सकता है, और trauma हो सकता है किसी वजह से, post infectious हो सकता है single nerve में, ठीक है? So mononeuropathies can be the cause. Okay, so this is another problem where the level of the involvement in AFP is at the neuromuscular junction. ठीक है? So that could be due to autoimmune region like myasthenia gravis, juvenile myasthenia gravis. ठीक है? That could be an infectious cause like botulism. ठीक है? And it could be due to various drugs and toxins. ठीक है? सही है? Clear? मसल इन्वॉल्वमेंट, acute onset, AFP की बात कर रहे हैं, congenital myopathy की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? So acute onset may be due to inflammation, due to infection, critical illness, myopathy, again multiple toxins, hypokalemia. These are the few systemic causes which may present or behave like AFP. So, what should be the diagnostic approach to a case of child with AFP? So the diagnostic approach, as a doctor, we all know it starts from the good relevant history and relevant focused examination of a particular system who is giving the clinical manifestation and the reason of reaching in hospital or ER. ठीक है? तो इसकी तो कोई माफ़ी नहीं है कि अच्छी हिस्ट्री नहीं ली जाए, अच्छा एग्जामिनेशन नहीं किया जाए, ठीक है? तो हिस्ट्री में आप पूछते हैं पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन क्या था, ऑनसेट कैसे हुआ था, प्रायर कोई इलनेस है या नहीं है, ट्रॉमा हुआ या नहीं हुआ है, इज देयर स्फिंक्टर इन्वॉल्वमेंट और नॉट, ठीक है? सो दिस इज द वे यू टेक अ रेलेवेंट पॉइंट. रिसेंट कोई वैक्सीनेशन तो नहीं हुई थी. सो अ डायग्नोस्टिक अप्रोच स्टार्ट फ्रॉम अ गुड हिस्ट्री एंड गुड एग्जामिनेशन फॉर रेजिडेंट, ठीक है? अच्छा जी, डायग्नोस्टिक अप्रोच में ये भी फैसला कर लेना है कि ये जो AFP मैं देख रहा हूँ, इज दिस ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल कॉज और नॉट? क्या सूडो पैरालिसिस तो नहीं है, है ना? थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज रिटन इन अ स्लाइड. तो सूडो पैरालिसिस इज द बेसिकली कंडीशन विच इज ड्यू टू नॉन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड यूजुअली द प्रॉब्लम इज pain. The patient try to avoid that particular part, but there may be the problem in a coordination, there may be the problem in a sensation, ठीक है? So pseudo paralysis की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, like hypokalemia है ना? So like pain है, fracture है उस जगह का, ठीक है? Like muscle weakness है due to inflammation, myositis है. So that is not a nerve cause नहीं है, उसमें neurological cause नहीं है.
ठीक. So if it is a neurological cause, is it a upper motor type of neurological lesion or lower motor type of neurological lesion? You have to decide. In a few situations this is difficult to decide. जैसे अभी हमने बात की ट्रांसवर्स myelitis, स्पाइनल ट्रॉमा, स्पाइनल इन्फार्क्ट या फिर ब्रेन स्टेम एन्सेफलाइटिस. So it may present with AFP in an earliest stage, and then later on you may find the findings of upper motor neuronal signs on a clinical examination. ठीक है? So we have to decide, is this a neurological? If neurological, is upper motor or lower motor type? And if it is a lower motor type, what could be the etiology behind this? These are the few distinguishing features जो आपको बताते हैं कि क्या problem. Taking a good clinical examination and relevant history. So if the child is having a fever at onset और AFP के साथ present किया है, you may think about a polio. ठीक है? If the child is having 2 to 3 weeks before respiratory tract infection or diarrhea or GI problem, the GBS could be the possibility. यही चीज़ें आप हिस्ट्री में पूछ रहे होते हैं. ठीक है? So ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस है तो IM इंजेक्शन का आपको वो होगा. ठीक है? इफ ट्रॉमा है तो स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा की आपको इंजरी मिल जाती है, हिस्ट्री मिल जाती है. इफ यू थिंक अबाउट इन्फेक्शन और बुल नेक और ये सारी चीज़ें, सो यू थिंक अबाउट दैट कि डिप्थीरिया है, पोस्ट डिप्थीरिया पोलीन्यूरोपैथी हुई है. क्लियर? So these are other relevant features which help you to the likely diagnosis of AFP. If you want me to read this, I can read it. Like, अगर ptosis है, vision problem है, respiratory paralysis है, you think about a GBS or botulism and the different variety of GBS. And if the patient is having a dermatological manifestation, it can be an inflammatory myopathy like dermatomyositis. And then if it is a headache, seizure, vomiting, it can be associated with the porphyria. Okay? So these are things which you think about a likely diagnosis if they are present in a history. So how to localize? हमने कहा कि different problems हैं that can manifest as a acute flaccid paralysis. So brain stem का problem, spinal cord का problem, anterior horn का कैसे decide करेंगे? With good clinical examination. So brain stem वाला unconscious होगा, cranial nerve palsies होंगी, initially lower motor के sign होंगे, फिर upper motor neuron के sign देता है. और उसमें आपको जो है वो बल्बर इन्वॉल्वमेंट की फाइंडिंग्स भी मिल सकती हैं. सो स्पाइनल कॉर्ड में यूजुअली स्फिंक्टर इन्वॉल्वमेंट एंड सेंसरी लेवल हेल्प्स यू. एंटीरियर हॉर्न में और नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट में लोअर मोटर टाइप की वीकनेस विथ एब्सेंट रिफ्लेक्सेस. And the peripheral nerves that usually manifest as a acral part, distal part, glove and stocking type involvement. Neuromuscular junction का problem है like juvenile myasthenia gravis, so that has a peculiar history. Ptosis होता है, change in a quality of voice होती है, difficulty in chewing and swallowing होती है, and diurnal variation के साथ मिलते हैं. So if there is a muscle involvement, there is a weakness, but usually the deep tendon reflexes are preserved. Sorry for this hazy picture. इसको मैंने आगे breakup किया है, and that is a very good picture which is commonly placed in AFP clinic. इसको detail में नहीं पढ़ूंगी मैं, लेकिन जब भी आप कभी अपनी OPDs एरिया में जाएं और अपनी AFP क्लिनिक में निगाह दौड़ाएं तो वहाँ पे अक्सर ये दीवारों पे लगी हुई होती है with clinical manifestations of different
common conditions which present with AFP, जिसमें ट्रांसवर्स myelitis है, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस है, GBS है, पोलियो है एंड चाइल्डहुड हेमीप्लेजिया। ये 5 कंडीशंस का एक होता है, यूजुअली AFP वाले अपने क्लिनिक्स में लगा के रखते हैं। कभी देखा? नहीं देखा? इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं यहाँ पे। So this is the clinical characteristic, how the paralysis began, was it accompanied with the fever or is it flaccid, what is the muscle tone, and these are the conditions: polio, GBS, traumatic neuritis, acute childhood hemiplegia and transverse myelitis. It's a very comprehensive chart. उसमें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा गूगल पर। So you should differentiate when you go to the ER, when you go to the OPD area and you want to filter the patient with AFP, तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इस चार्ट से। So if suppose like cranial nerve involvement की बात करते हैं, ठीक है? So cranial nerve involvement is not the part of polio. अगर bulbar polio, which is the rare type of poliomyelitis, ठीक है? एंड GBS में क्रेनियल नर्व्स मिल सकती हैं, 7 भी हो सकती है, और वो वाली क्रेनियल नर्व्स जो आपका गैग रिफ्लेक्स करवाती हैं और टंग को सप्लाई करती हैं, ठीक है? 9, 10, 11, 12। सो ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस में कोई क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और अगर अक्यूट चाइल्डहुड हेमीप्लेजिया है तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ लीजन। फिर इसमें आपको क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया मिलता है, जिसमें फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर? एंड इसी तरीके से जो है वो ट्रांसवर्स माइलाइटिस में एब्सेंट होती है क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। सो दिस इज द गुड चार्ट you may find on the internet. Very good differentiating point between the commonest condition who present with acute flaccid paralysis. ठीक है? तो इसको मैं रीड नहीं करूंगी, ये आपको खुद सॉर्ट आउट करना है, देखना है, and then you filter the patient in your OPD areas and in your emergency areas, और वार्ड के पेशेंट में भी आप एग्जामिन करें। So it has a long list of characteristic, ठीक है ना? कि नाउ कंडक्शन वेलोसिटी किस में कैसी होगी, ये तक लिखा हुआ है, स्फिंक्टर इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी। Very comprehensive. Okay. As we discussed about the definition of AFP, as we discussed the different level of involvement in AFP, as we discussed about the differential diagnosis related to AFP, we decided this is AFP. ठीक है? So how to manage a AFP? So when I was in a training for neurology, so एक रेड अलर्ट है कि AFP का हर बच्चा जो है वो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, until and unless you exclude it, it's not AFP, है ना? So AFP is a acute neurological emergency, acute pediatric medical emergency, ठीक है? तो क्या करना है? 4 सिंपल स्टेप्स लेने हैं। इनिशियली स्टेबलाइज करो, फिर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन करो, रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करो, एंड डायग्नोसिस एप्रोप्रिएट थेरापेटिक इंटरवेंशन करो। 4 स्टेप्स जो हम डॉक्टर्स हर कंडीशन के लिए करते हैं, ठीक है? सो स्टेबलाइज करो। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है, और रेस्पिरेटरी मसल सही काम नहीं कर रहे हैं, सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। इंट्यूबेट करना है, क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड। डिटेल हिस्ट्री एंड फोकस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करो उसके बाद। सो दिस इज द इनिशियल स्टेबलाइजेशन। आपने क्या क्या करना है, ठीक है? हाँ, बल्बर वीकनेस है, उसको ज़रूर देखना है। आई ऑलवेज आस्क माई रेजिडेंट कि गैग चेक किया है, जो कि अक्सर हम नहीं करते हैं, भूल जाते हैं ना। खा रहा है, बैठा हुआ है, मैडम बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है। एंड स्टिल आई रिमेंबर अ चाइल्ड हु वाज सिटिंग कंफर्टेबली ऑन अ बेड,
और उसको खिलाया जा रहा था. And then we went for a round in another room and we turned back, the child was collapsed with CPR, फिर एम्बू और ये सारी चीज़ें, and unfortunately that baby doesn't revive. तो never assume कि खा रहा है तो ठीक है भाई, खा रहा है, वो उसकी इंस्टिंक्ट है, उसको भूख लगी है, वो खाएगा. आप देखो वो खाने के लिए फिट है या नहीं है. So what is a big deal? अगर गैग रिफ्लेक्स वीक है, एनजी डाल दो. Always preempt. हम ये कहते हैं नहीं अभी तो ठीक था, अचानक से कोलैप्स हुआ है, माँ ने दूध गलत दे दिया था, वो एस्पिरेट हो गया. सो मेजॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट्स आर लाइक दिस. ऐसा कुछ नहीं होता. ऑलवेज प्रीएम्प्ट द थिंग्स. देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग. कोई चीज़ अचानक नहीं होती है, स्पेशली इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन. जब बच्चा हॉस्पिटल में बैठा हुआ है तो ये अचानक वाली कहानी तो होनी ही नहीं चाहिए. ऐसा ही है ना मैडम? So this is what you do for initial management. This is second step. This is investigation. And investigation, your differential diagnosis leads you to the investigation. क्या करवाना है ना? अगर your strong diagnosis is GBS, तो फिर आप MRI को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं करते हैं. फिर आप नर्व कंडक्शन स्टडी और EMG करते हैं, आप CSF करते हैं. बट इफ़ योर स्ट्रॉन्ग डायग्नोसिस इज ट्रांसवर्स myelitis, तो देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर द MRI कंट्रास्ट. ठीक है? सो योर प्राइमरी डायग्नोसिस लीड्स टू द सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. So this is the list of investigation which you have to do. ठीक है? CPK भी देख लेते हैं क्योंकि GBS में ट्रांसवर्स myelitis में थोड़ा सा मायोसाइटिस का एलिमेंट भी होता है, उसमें CPK बढ़ा हुआ होता है, which is usually supportive, which is not a diagnostic investigation. ठीक है? So what is the specific therapy which we all know by heart? ठीक है? So अगर तो GBS है तो प्रायोरिटी आप IVIG को देंगे. If grown up child, बड़ा बच्चा है, तो फिर आप plasmapheresis ऑप्ट करते हैं because of the financial constraint. ठीक है? Related to the plasmapheresis, IVIG is comparatively safe because plasmapheresis need intervention. And it has its own complication, and it has to be continue on for 5 days. Patient remain on a bed. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं. ट्रांसवर्स myelitis है तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिथाइलप्रेड की पल्सेस को. Then you have to opt for IVIG. So what if there is a traumatic neuritis, physiotherapy and supportive management? What if it is a hypokalemia, you have to replace it? What if it is a poliomyelitis? Poliomyelitis has a no cure, it just only leaves a supportive management. And myelopathy है तो then you have to neurosurgical intervention and immobilization और ये सारी चीज़ें. Okay, AFP surveillance एग्जाम में पूछते हैं. दिल नहीं चाहता पढ़ाने को. दुनिया के नक्शे पे 2 ही मुल्क हैं जिस पे अभी भी रेड डॉट है. When you look for the word globe, you find a red dot on 2 countries. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. जब हम पढ़ते थे मैडम, आप लोग हमें पढ़ाते थे 4 मुल्क हैं जिसपे ये लाल धब्बा पड़ा हुआ है. उन 4 मुल्क में से अफ्रीका और इंडिया जो है वो इससे आउट हो गए. दे आर पोलियो फ्री. इंडिया जो है वो 2014 से पोलियो फ्री कंट्री है. अफ्रीका 2020 से. एंड हम करीब थे, हम खुशी की शादियाने बजा रहे थे in 2021 when we have just 1 case reported.
2021 में बलूचिस्तान किला अब्दुल्ला में एक केस रिपोर्ट हुआ था, and the AFP team and everyone was happy who was related to this, कि we are close to the polio free country. And then in a 2022 we have a 20 cases. So everybody knows what is the reason behind, because of a porous border and intertwined relationship with the brother country Afghanistan. So people are coming across. AFP surveillance has decided that we have to do the combined strategy for both the countries. So it was decided in 2021, and from 2022 till date, the polio campaign is simultaneously started in both countries. एक बच्चा अगर वहाँ से चला है, कंधार से, काबुल से चला है, तो वो रास्ते में जहाँ जहाँ शेड कर रहा है वो पी के निकले अपने घर से, और कहीं मिस हो रहा है तो रास्ते में पी ले, वो फिर केपी के, कराची या फिर जो है बलूचिस्तान में कहीं अपना वायरस शेड ना करे, ठीक है। सो वो कंबाइंड ग्लोबल पोलियो इनिशिएटिव प्रोग्राम एंड पोलियो स्ट्रेटेजी के तहत ये चीज़ बनाई गई थी। सो दिस इज AFP सर्विलेंस। इसका मकसद ये था कि जी सर्कुलेटिंग पोलियो वायरस को देखें और पोलियो को इरेडिकेट करें, ठीक है। और इसी मकसद के लिए AFP की डेफिनेशन बनाई गई ताकि आप हर पेशेंट को रिपोर्ट कर दें, ठीक है। और जब वो रिपोर्ट होगा तो फिर उसका सैंपल जाएगा जिसमें जो है वो वायरस आइडेंटिफाई होगा, वायरस का स्ट्रेन आइडेंटिफाई होगा, और वो वायरस कहाँ से ओरिजिन होगा ये भी पता चलेगा। So it was started in 1988 perhaps, Global Polio Eradication Initiative. Yeah. Yes, it's 1988. So इसका काम ये था कि एक्टिव सर्वेलेंस करें, इम्यूनाइजेशन करें, इम्प्रूवमेंट करें सैनिटेशन से, एंड मोप अप करें। और आखिर में फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करें, इंटरप्ट द वाइल्ड पोलियो ट्रांसमिशन एंड सेंसिटाइज द मासेस मेन स्ट्रीम अबाउट अ पोलियो वर्ल्ड वाइड, एंड देन टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर ग्लोबल OPV फेज एंड टू अचीव द सर्टिफिकेशन ऑफ ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन। ये आप लोगों से एग्जाम में पूछेंगे, याद कर लीजिएगा। सो दीज आर द गोल्स ऑफ पोलियो एंड गेम, जो कि 2019-2023 में बनाई गई। इसके 3 ही टारगेट थे कि पोलियो को इरेडिकेट कर दें, इंटीग्रेट करें, ठीक है ना, गुड सर्वेलेंस से और इन सारी चीज़ों से, एंड देन सर्टिफिकेशन करें कि पोलियो इरेडिकेट हो गया है और कंटेनमेंट हो गई है उससे। अभी तक ये टारगेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अचीव नहीं हुआ। दिस इज़ वेरी बेसिक स्लाइड, है ना, तो आई जस्ट कीप इट फॉर अ रेजिडेंट। उनसे अमूमन ये टॉक्स में या वाइवा में पूछ लिया जाता है कि, और एज अ डॉक्टर वी मस्ट नो, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द पेशेंट विद AFP, है ना, तो वो हमेशा AFP क्लिनिक वाले एक डब्बा आपको पकड़ा के चले जाते हैं, जी इसमें स्टूल कलेक्ट करवा लीजिएगा, ठीक है, और हम वालिदैन को दे देते हैं, वो बेड के नीचे घुसा रहता है डब्बा। तो स्टूल कलेक्शन करने के लिए यू मस्ट इन्फॉर्म द मदर और अ केयर गिवर कि कैसे लेना है, टू इम्प्रूव द डिटेक्शन ऑफ वायरस इफ देयर इज वायरस, ठीक है। तो यूजुअली वो कहते हैं कि जी स्टूल कलेक्शन आप 14 दिन के अंदर अंदर कर दें अगर AFP हुआ है, लेकिन 60 दिनों के अंदर भी कर सकते हैं। 14 डेज के अंदर आपकी यील्ड अच्छी होगी, ठीक है। और 2 आपके सैंपल्स पेशेंट के चाहिए होते हैं 24 आवर्स अपार्ट, और द गुड अमाउंट ऑफ स्टूल, जैसे वो कहते हैं कि साइज ऑफ अ थंब, 8 ग्राम, ठीक है, एंड इट शुड बी collected in a properly maintained cold chain, and it should be dispatched to the laboratory immediately after collection. See?
ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पाकिस्तान का डेटा है। 21 में हमारे पास एक केस था, बलूचिस्तान में डिटेक्ट हुआ था। फिर 22 में हमारे पास 20 केसेस आ गए, ये सारे ही केपी केस से डिटेक्ट हुए थे। एंड देन दिस इज द डेटा टिल डेट। कराची में भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और गडाब एरिया में 2 केस डिटेक्ट हुए हैं, एंड देन द रिमेनिंग 4 आर फ्रॉम केपी 23 में। दिस इज द डेटा फ्रॉम NICH AFP क्लिनिक, जिसमें इस साल अप टिल 1 दिसंबर तक 245 पेशेंट विद द प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ AFP रिपोर्ट हुए। और इन रिपोर्टेड केसेस में 3 केसेस में सस्पेक्टेड था पोलियो, बट फॉर्चुनेटली द स्टूल सैंपल वाज नेगेटिव। 96 were JBS, and these are the breakup of rest of the cases. Okay, this is the data of neurophysiology clinic where the NCS has been done in a patient with provisional diagnosis of GBS. 42 patients का हमने किया था, और उसमें जो हमारे पास different varieties निकली वो ये था कि अमान variety हमारे पास ज़्यादा आई थी, then MSAN, AIDP, CIDP and traumatic neuritis, and these are the other breakups. This is for this year till December. इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, सिम्टम्स और etiology, everything is known to everybody, but most frequently in children under 5 years of age पे है। और एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि it has a asymmetrical involvement, but the involvement of the proximal part is greater than the distal muscles. ठीक है, and the management is supportive care. And this is the photograph of a child who has suffered from a poliomyelitis. So take home message यही है कि ये करें ताकि ये ना हो, है? Especially pediatric resident, जब आप बैठे हुए ना क्लिनिक में, अंडर 5 वाले से पूछ लें हिफाजती टीके लगे हैं नहीं लगे, पोलियो के कतरे पिलाते नहीं, ठीक है, तो है वो एम्फसाइज किया करेंगे इम्यूनाइजेशन के लिए भेजें। That I do with patient, especially those who have been not immunized with measles, or as a neurologist we saw a very pathetic condition, SSB, and I used to parents of those children who suffered from SSB as a counselor for other parents. एक तो हमारे पेरेंट ने NGO बना ली, वो जाता है मस्जिदों में जो ऐलान करता है, जुमा नमाज के बाहर लोगों को जो है वो पम्फलेट देता है कि अपने बच्चों को खसरा का टीका ज़रूर लगवाया करें, और उसके पास उसकी बच्ची की तस्वीर होती हैं, मोबाइल पे उसकी वीडियोस होती हैं। ही इज़ नॉट अ वेरी रिच पर्सन, वो अपने रिसोर्सेस में जो कर सकता है वो लोगों को अवेयर करता है। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अबाउट द GBS, as the polio is under control, so the GBS is the most commonest cause of AFP currently, ठीक है, and इसके इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड जो है वो 4 केसेस पर 100,000 पर ईयर रहते हैं, ठीक है, and it is a immune mediated phenomena, we all know, and it has a different varieties. These are the subtype of GBS, and the most common type is EIDP, ठीक है। This is the etiological profile of GBS के infection है, vaccines हैं। So इसमें सेंसरी इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है, पोलियो में कोई सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सेंसेशन का कोई इशू पोलियो में नहीं होता है। GBS में मिल सकता है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस में मिल सकता है, इवन इन अ स्ट्रोक सेंसरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सही। So this is the important thing to remember about the autonomic involvement.
ये इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दिया कीजिए कि हार्ट रिदम कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ठीक है ना, ब्लडर डिस्फंक्शन है या नहीं है, स्वेटिंग और ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें. आई थिंक इट्स आई एम गोइंग बियॉन्ड द टाइम. Yes. Okay. So this is the management of GBS. This is the disability score related to GBS. From minor involvement to the extreme of involvement, which may lead to the death. Hagees GBS disability score. So I think I just quickly go with the transverse myelitis. So transverse myelitis की presentation depend करती है which area of the spinal cord is involved and how many segments are involved. ठीक है ना? So usually the transverse myelitis is symmetrical, but it may present asymmetrical. Depends on the level of site of involvement, and it is a type of neuronal disorder which initially manifests as a AFP, and gradually the patient evolves from the sign of lower motor neuronal disorder to the upper motor neuronal disorder. This is the etiological profile. So idiopathic भी होता है, secondary भी होता है, and direct infection related myelitis भी होता है. So जो सेकेंडरी कॉजेज हैं उसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड जो होता है वो यूजुअली आजकल एनएमओ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये एंड मॉग एसोसिएटेड. सो बोथ हैव अ डिफरेंट प्रोसेस. एनएमओ इज मोर सीवियर एंड इट हैज अ मोर chances of recurrence. Okay. Comparatively, MOG has a good prognosis apart from this visual involvement. So antibodies must be sent in any patient who has a long segment transverse myelitis. उसकी ज़रूर भेजा कीजिए. And most of these patients do remain on a chronic immunosuppressions. हम ये दे रहे होते हैं इनको. फिर rituximab is very expensive. So as the part of a public sector hospital, we start them on a cyclophosphamide. छोटा बच्चा ज़्यादा सीवियर सीक्वेली ट्रांसवर्स माइलाइटिस के अंडर 3 years वाला है. बड़ा है तो चांसेस अच्छे हैं कि रिकवर हो जाएगा. कुछ रेजिडुअल डेफिसिट रहेगा और सबसे जो बुरा रेजिडुअल डेफिसिट होता है वो स्फिंक्टर इन्वॉल्वमेंट होती है. So if you imagine a grown-up girl, grown-up boy, 13, 14 years of age and now in a diapers, तो स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं रहता है. स्टूल और यूरिनरी कंट्रोल के प्रॉब्लम्स परसिस्ट करते हैं. ठीक है. सवालात? कोई सवाल नहीं? जी. किस तरह देते हैं? जी, तो 2 ड्रॉप्स देते हैं और उनकी कोल्ड चेन मेंटेन होती है. वो अपने बॉक्स से निकालते हैं. इट हैज़ अ पिंकिश कलर. इफ द कलर चेंज और ये हाँ you have to see that कि वो while monitored अंदर से पढ़ाई बिल्कुल वाइट होना चाहिए. उसके बाद वो मैच करने लगता है. आप अगर आप फाइनल ईयर में आपको दिखाते हैं वैक्सीन वाल मॉनिटर आपके उस पर लगा होता है पोलियो ड्रॉप्स के ऊपर. तो आप यहाँ के जो वैक्सीनेशन पार्टनर है उधर जाके देखिए. आप इसका मतलब ये है कि हमें पार्ट 2 में तो ये भी देखना पड़ेगा कि पोलियो ड्रॉप्स कैसा. तो वो आप जरूर देखो बेटा. तो जो घर आते हैं ना, अगर बी का डॉक्टर
बीइंग अ मदर आपको कुछ भी आना चाहिए कि ये बीबीएम है और ये सही है, पोर्शन मेंटेन है, तो वो हल्के पिंकिश कलर के होते हैं ना, लाइट पिंक। और ओरली आपको ओरल अभी तक ओरल है और ओवरलैप हो रहा है आईपीवी के साथ, मगर प्लीज़ आप लोग खुद से एक वीवीएम और पोलियो ड्रॉप्स का वो एक देख लें। कोई कह रहा था कि बीच में कोई रूह अफ़ज़ा के कतरे भी लोगों को पिलाए गए थे, तो वो एक चीज़ आप लोगों को खुद प्लीज़ आप वैक्सीन वाइल मॉनिटर और वैक्सीन आप पोलियो ओरल पोलियो ड्रॉप्स आप देख लें, एंड इट्स सेफ आपके अपने बच्चों के लिए भी। और अगर वीवीएम सही लग रहा है, बीइंग अ डॉक्टर आप चेक भी कर सकते हैं। उन पर भी बहुत पाबंदी होती है, बहुत ज़्यादा एलएचवीज पे जो बेचारी पिला रही होती हैं या जो भी पोलियो वर्कर्स हैं, दे नो कि ये आपको कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है, तो आपको कोल्ड चेन के लिए खुद कलर चेंज हो जाता है पर्पल से। हाँ, पर जो वीवीएम है उसका कलर चेंज होता है, पहले तो वाइट होता है, वो पर्पलिश सा कुछ हो जाता है, डार्क हो जाता है। एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक चौकोर बॉक्स होता है, चौकोर सा बॉक्स होता है छोटा, तो वो वीवीएम कहलाता है। So we may not able to explain it. You just go to the clinic, immunization. इवन यू कैन गूगल इट, इमेजेस में आ हाँ, जाएगा आपको। ठीक है। Okay, this is the Department of Pediatric Neurology at National Institute of Child Health. ये हमारा outpatient area है, and this is the OPD area with record room and neurophysiology lab, and this is our ward at NICH. ठीक है, thank you so much.